स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 7 चल रहा है बेटा हमारा सिविक्स का, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो क्लास है ये हम इसमें जो हमारा रह गया था पार्ट, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्जिनलाइजेशन जो है, जो नेशन जो किया जाता है वो किन किन बेसिस पर किया जाता है। ओके, तो इसमें हम आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे माइनॉरिटीज़ के बारे में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या मार्जिनलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड। लेकिन क्या हुआ था, ब्रिटिश ने हमें कोलोनाइज किया था और ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड भी हमने देखा था कि बहुत ज्यादा ट्राइब्स को टॉर्चर किया जा रहा था। दे वर आस्क्ड टू मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स एंड दैट इज व्हाई बहुत सारे रिवोल्ट्स भी किए गए थे बाद में। थिंक ऑफ सम अदर वेज वेयर यू कैन टॉक अबाउट आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? प्लीज रीड अबाउट द डिफरेंट ट्राइब्स दैट एग्जिस्ट इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। इनको काफी सारा नॉलेज होता है। दे कैन एक्चुअली गिव यू ट्रेडिशनल मेडिसिन एट लो कॉस्ट फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ, राइट? सो इस तरीके से दे हैव बीन एबल टू डेवलप बाय कंट्रोलिंग अ लॉट ऑफ द ट्रैक्स। लेकिन शुरू से इनके तरफ क्या किया जा रहा है, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ विच व्हाट इज हैपनिंग, उनकी डेवलपमेंट हॉल्ट कर दी जाती है, राइट? आई होप एवरीथिंग क्लियर टिल हियर। This meant that they were not ruled by large states and empires. Instead, often empires heavily dependent on Adivasis for the crucial access to forest resources. पहले इनको कोई रूल नहीं करता था. They used to have self rule. ये लोग बहुत ही फ्री रहते थे विद इन दी फॉरेस्ट. बट धीरे धीरे क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मोटिव्स आने लग गई, तो कभी ब्रिटिशर्स ने इन्हें एक्सप्लॉइट किया, कभी मनी लेंडर्स ने किया, राइट? एंड इसके पहले क्या होता था, बहुत लोग इन पे डिपेंड करते थे ताकि ये फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं ये उनको प्रोवाइड कर सके. सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर. This is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal and powerless communities. तो हमने पास्ट में क्या देखा कि उनको एक्चुअली पावर दिया जा रहा था. It was being believed that they know everything about the forest and इनको ये जस्ट दी जाती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी है ये लोग प्रोवाइड करेंगे. बट आज क्या देखा जा रहा है, आज हम लोग इनको बहुत ही बैकवर्ड, आउटडेटेड और पावरलेस समझते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ टाइम हैज चेंज्ड एंड टाइम हैज मेड देम face more social discrimination. Everyone okay? For the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, political force applied by government, private industry to migrate. That means move from one place to another. क्योंकि क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गई. एंड जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई वैसे वैसे एरियाज की जरूरत होने लग गई. एंड दिस एरियाज केम टू बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेसमैन, बाय द गवर्नमेंट, by other people. So that is why this Adivasis they had to shift from one place to another. कहीं कहीं ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करने लग गए, कभी प्लांटेशंस में, कभी दूसरों की इंडस्ट्रीज में, कभी डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह. सो दैट इज व्हाई द प्रोग्रेस ऑफ आदिवासीज इट केप्ट कमिंग डाउन और इनको बहुत ज्यादा सोशल एक्सक्लूजन का शिकार बनना पड़ा, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस दे आर नोन एज अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. For the first time in history, they do not have control or direct access to the forest territories. धीरे धीरे ऐसा करते करते ऐसा हो गया कि अब फॉरेस्ट में इनका ज्यादा कोई कंट्रोल बचा नहीं. That means their lives deteriorated, their quality of life deteriorated. जो ये करते आए थे इनको वहां से भी निकाला गया. इसीलिए आप बहुत बार देखोगे कि they are very hesitant to mix with the normal crowd. For example, Andaman Nicobar mein if you go, you will see that a lot of tribes they don't allow outsiders to come in. Outsiders को क्या कहते हैं ये लोग? Dikkus कहते हैं. They call them as Dikkus, which you will read in history. Migration of Adivasis. Migration is basically moving out from a certain area. 1830s onwards क्या होने लग गया? Adivasis from areas like Jharkhand एंड नियर बाई एरियाज ये लोग बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर्स में निकले और दूसरे दूसरे प्लांटेशंस में चले गए. फॉर एग्जांपल मॉरिशियस, कैरिबियन एंड इवन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये लोग इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए थे. पहले ये लोग का क्या था, पहले फॉरेस्ट से ये लोग बहुत कुछ कमा लेते थे, बेसिकली व्हाट एवर दे रिक्वायर्ड.
एंड कभी कभी ये लोग जब रिसोर्सेज देते थे फॉरेस्ट के टू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो वो लोग इनको कुछ प्रोडक्ट्स दे देते थे फॉर देयर यूसेज। इस तरीके से देयर लाइव्स यूज्ड टू मूव ऑन। बट धीरे धीरे क्या हुआ, फॉरेस्ट बिगैन टू बी टेकन कंट्रोल ऑफ by the government, by the private people. So these people, they started losing their rights and becoming economically weak. Now they had to go and search for their livelihood. और इस वजह से ये लोग क्या करने लग गए, ये लोग प्लांटेशंस वगैरह में मूव कर गए टू प्लेसेस लाइक मॉरिशियस, कैरिबियन एंड इवन ऑस्ट्रेलिया, एंड वहां पे दे स्टार्टिंग देयर लाइफ। India's tea industry became possible with their labor in Assam. The story of this migration is full of extreme hardship, torture, heartbreak, and death. For example, in the 19th century alone, 5 lakh Adivasis had perished in these migrations. तो ये बहुत ही एक सैड स्टोरी रही है इनके लिए। इनको मूव करवा दिया जाता है फ्रॉम देयर प्लेस, फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेसेस। इनको बहुत टॉर्चर किया जाता है बिकॉज देयर सिचुएशन इज नॉट गुड, they have been marginalized, nobody tries to include them, and because of all this, more than 5 lakh tribal population has died out because of moving from one place to another. So such is the plight, and that is why it is very important for you guys to be sensitive towards this fact, right? कि marginalization जब हम लोग करते हैं, तो what are the problems that we are bringing about for a group of people? Just put yourself in that situation and try and understand how it can feel. And that's how we, we'll be able to realize that this is not what we should be doing. And when we see something like this happening, then what are the actions that we can take, or is there something that we can teach to the people around us if they are doing this kind of activities towards the marginalized communities. रीजंस फॉर माइग्रेशन ऑफ आदिवासी, क्यों माइग्रेट करना पड़ता था? एक तो फॉरेस्ट क्लियर होने लग गए क्योंकि टिम्बर चाहिए, अदर प्रोडक्ट्स चाहिए, ह्यूमन बींग्स की डिमांड्स बढ़ने लग गई, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और माइनिंग एरिया सेटअप हो गए वहां पे जहां पे ये लोग रहा करते थे, सो दे हैड टू मूव। अपार्ट फ्रॉम दैट, फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट थ्रू लैंड टेक ओवर्स, इनका लैंड भी ले लिया गया, राइट right? Yes, as you can see, forceful takeovers. That means their land was taken away for some other purpose, and इस वजह से ये लोग को displace होना पड़ा. Since they are weak, that is why they could not take any action against it, and इनको जाना पड़ता है. Militarization of their lands in northeast region. अब northeast region में बहुत ज़्यादा AFSPA and military established है, so वो लोग भी इनकी lands को कभी कभी ले लेती हैं, and that land is used for military purposes. So that is why also they have been moved from one place to another. What is plight of Adivasis? Plight is basically sadness or misfortune. So अब इन सारी कहानियों को देख करके you have already understood what is the sadness that happens on account of marginalization. So 45% in rural areas and 35% in urban areas, tribal population, they live below the poverty line, which is BPL. So ये लोग बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं. इनके चिल्ड्रन मैल नरिश्ड है क्योंकि इनको अच्छी तरीके से कोई प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, राइट? Literacy rates is very very low. They cannot afford education. They have been keeping themselves aloof, but we have made them more aloof. And displacement और ये करने के चक्कर में ये लोग रेफ्यूजीज भी बन जाते हैं, राइट? ये लोग रेफ्यूजीज भी बन जाते हैं. दे लूज देयर इनकम, दे लूज देयर ट्रेडिशंस, दे लूज देयर वे ऑफ लाइफ. आज आप सोचो, यू हैव अ सर्टेन कल्चर. If somebody just picks you up or doesn't give you time and throws you into some other spot, will you like it? No, right? So such is the case with them. They have not been able to follow their traditions. They have not been able to follow a decent pattern of life जहाँ पे वो लोग खुद की livelihood के लिए एटलीस्ट कुछ कमा सके. All of that has been taken away from them, and such is the sadness. Coming to some facts, India has 104 national parks. You can talk about Kaziranga National Park, very very famous. You can talk about Jim Corbett. You can talk about Ranthambore. Okay, there are many national parks. India has around 553 wildlife sanctuaries. You can remember this क्योंकि ये आपके book में दिया हुआ है. Please learn this fact. Please learn this fact right away. And यहाँ तक कुछ भी doubts है, please ask. So we have read about one community. Now we read about tribes. Okay, कि इनको कैसे marginalize किया गया है, क्यों किया गया है, how was their life earlier, okay, past life, how is their present life,
And now we are going to talk about another community that has been marginalized because it has less population, low population. इस वजह से क्योंकि ये लोग लेस इन नंबर हैं तो इनको अलग और एक्सक्लूड कर दिया जाता है. Who are minorities? So minority is used to refer to those communities जो कि numerically small है in relation to the rest of the population. As you can see here, share of religious communities in total population. Muslims 13.2, Christians 2.3, Sikhs 1.9, Buddhists 0.8, Jains 0.4 and others are 0.6. What is the population of Hindus that you guys are going to tell me? And having had a look at this, you can very well understand that it will be around 60 to 70%. But ये concept क्या सिर्फ numbers की है? नहीं. We have not just kept it to numbers, we have manifested it in a larger way. We have moved it beyond numbers and we try to exclude them from the society as well. What are the minority issues? इनको issues of power होता है. Many times you will see, you will talk about protection of minority rights. क्यों? क्योंकि जो majority है वो लोग इनके rights को curve कर देती है, इनके rights को subvert कर देती है और इनके ऊपर अपनी चीजों को impose करती है. So इसीलिए इनको protection देने के लिए our constitution talks about minority rights. इनको एक्सेस टू रिसोर्सेज में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि दे डोंट हैव मच रिसोर्सेज टू देमसेल्व्स. सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस में भी इनको कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. साइज कैन बी अ डिसएडवांटेज एंड लीड टू द मार्जिनलाइजेशन. ये हमको इस एग्जांपल से समझ आता है, राइट? When you are small in number, that means you can face this kind of issues whereby you can be excluded, like we had seen in the rent taking example. There was this Muslim family, they wanted to take a house on rent, but they were not given it because of their religion. और उनको टरकाया जा रहा था. लास्ट में उनको ये सजेस्ट किया गया था that please change your name if you want to take a rented house. But that is against anybody's self-respect, right? So these are some kind of issues that they face in day-to-day lives. For example, if they're going somewhere, they might be, eve teased, or they might be actually discriminated against. So these are the issues that they feel that they face because they have had a less population and वहां से ये सारी चीजें escalate हो गई. कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है इनके रिगार्डिंग? सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू देम ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस नहीं करनी पड़े. देयर आर टू काइंड्स ऑफ माइनॉरिटीज. वन इज रिलीजियस, द अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दैट इज लिंग्विस्टिक. So safeguards are provided as a part of fundamental rights. You can know about the articles that provide them. ये सेफगार्ड्स इसलिए नीडेड है ताकि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि ये लोग टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी फेस नहीं करें. That means they are not subject to the whims and fancies of the majority. They are also having equal rights just like the other citizens. और इनको डोमिनेट नहीं किया जा सके, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइड की गई है. It is committed to protecting India's cultural diversity and also promoting equality as well as justice. So India is a democratic country, right? You all are aware of that. इसीलिए it is very important for us to follow our unity in diversity concept, and that is why we take care of our minorities and provide them with justice जब भी उनकी rights violate होती है. Minorities and marginalization, again, communities that are small relative to the rest of the society, they feel insecure about their lives, assets and well-being, and that is the concept of marginalization and being a minority. ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्या होती है? ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इसलिए होती है कि भाई एनीबडी कैन टॉर्चर अस, एनीबडी कैन डोमिनेट अस हु आर मोर इन नंबर. और ये कब बढ़ जाती है? जब रिलेशन बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटीज बुरी हो जाती है या फिर कोई कम्युनल फाइट्स होने लग जाते हैं, राइट? एनी एस्केलेशन इन दिस काइंड ऑफ लीड टू टेंशंस बिटवीन टू सेट ऑफ ग्रुप्स, दैट इज द मेजॉरिटी और द माइनॉरिटी, right? Everyone knows of this. For example, increase in the fights between Hindu Muslims will lead to mob lynching. ये सारी इंसिडेंट्स जब इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा? माइनॉरिटीज की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है बिकॉज दे फील दैट नाउ द माइनॉरिटीज और नाउ द मेजॉरिटी कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम. Let us understand marginalization in the context of the Muslim community. So यहाँ पे हम लोग religious communities की बात कर रहे थे. ये कोई भी religious Muslim community के अलावा भी हो सकता है, but in this chapter we are taking the examples of Muslims. Population and others.
According to 2011 census, Muslims are 14.2% of India's population और इनको एक marginalized community माना जाता है in India क्योंकि इनकी population काफी कम है. Census क्या होता है? Census is basically a survey kind of an activity that tells you about the demographic structure या फिर एक population के बारे में जो आपको बताता है. This is held every 10 years in India. Next is going to happen in 2021. So based on this population number that we got, इनको एक marginalized community माना जाता है. Indian Muslims, they lag behind other communities in most of the human development indicators. So as a result of marginalization, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये लोग education में पीछे हैं, right? 31% Muslims live below the poverty line. 25% Muslim children have either never attended school or dropped out, that means educational issue. 4.5% employed in Indian Railways, the country's poorest employer, that means they don't have employment. 3% are in the Indian civil services, बहुत ही कम representation. 3.5% in country's banking sector. 1.6% only in the foreign services. So in this way, a lot of opportunities have been denied to them or they have not been able to take advantage of because they have been marginalized. So these are the ways we come to know and we confront about marginalization. Population and others, in comparison to other communities, they have been deprived the benefits of socio-economic development. एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि बेसिक अमेनिटीज कैसे डिफर करती है दो कम्युनिटीज के लिए. कच्चा हाउसेस, 63.6% मुस्लिम्स कच्चा हाउसेस में रहते हैं जबकि ओनली 55.2% ऑफ हिंदूज लिव इन देम. इलेक्ट्रिसिटी, 30% ऑफ मुस्लिम्स को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है बट हिंदूज में इट इज 43.2%. पाइप्ड वाटर, 19.4% मुस्लिम्स को मिलता है पाइप्ड वाटर while 25.3% Hindus get it. So in this way, there is a lot of difference between the lives of one majority community and one minority community, that is Muslims. Literacy rate में भी बहुत difference है. All में 65% है, Hindus में 65 है, Muslims में 59, Christians में 80%. See, despite having low what do we say, population, they have a good education. So it is not necessary always that this thing has to represent itself in the form of education. ये और भी तरीके से दिख जाती है. एक स्टीरियोटाइप की भी हमने बात की थी जहाँ पे हमने एक केस स्टडी देखी थी that we always feel that Muslim families do not send their girls to school. But that is basically a stereotype क्योंकि ये हर जगह नहीं होता. It was basically because of poverty that they were not able to send them. Sikhs में 70%, Buddhist में 73% and Jains में 94%. So these are the ways in which Muslim community has been marginalized. Coming to Sachar committee, ये क्या थी? ये basically वो committee थी जो form की गई थी to find out about the social status, educational status and economic status of the Muslim community. Why was it required? In order to bring safeguards अगर कुछ भी problems हो रही हो तो, right? अगर हमें problems identify करने हैं तो हमें safeguards भी लाने होंगे if we are identifying those problems. तो सच्चार कमेटी ने क्या रिजल्ट दिया था? दैट ऑन अ रेंज ऑफ दिस पैरामीटर्स इनकी सिचुएशन कंपेरेबल है टू दैट ऑफ एससीज एंड एसटीज और इसीलिए हमें इनको बूस्ट अप देना चाहिए. सच्चार कमेटी रिपोर्ट ऑल्सो डिबंक्ड अदर मिथ्स अबाउट मुस्लिम्स. मिथ्स मतलब फॉल्स बिलीव्स. इट इज कॉमनली बिलीव्ड कि मुस्लिम्स ज्यादातर अपने बच्चों को मदरसाज में भेजते हैं, दे विल नॉट सेंड देम टू प्रॉपर स्कूल्स. लेकिन इस कमिटी रिपोर्ट में ये प्रूव किया गया था दैट ओनली 4% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन आर गोइंग टू मदरसाज whereas 60%, 66% गवर्नमेंट स्कूल्स जा रहे हैं, 30% प्राइवेट स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं. सो ये हमारे जो क्या होते हैं फॉल्स बिलीव्स होते हैं. इसके वजह से भी बहुत बार हम लोग किसी लोगों को या किन लोगों को अलग कर देते हैं बट दैट एक्चुअली backfires. That is actually not a fact. And this stereotype was broken by Sachar Committee report. Economic and social marginalization experienced by Muslims, इनके और भी dimensions होते हैं. Like other minorities, their practices are quite distinct from what is seen as the mainstream. इनकी कुछ practices अलग होती है. For example, wearing of hijab. अब बहुत सारी countries हैं जो इसे ban कर देती हैं या फिर जो इनके religious practices में encroach कर देती हैं. So even that creates a sense of insecurity that are we not allowed to fulfill or are we not allowed to follow what we want? They will usually have long beards. In this way also we try to stereotype, right?
So this kind of practices make them different from the mainstream, and that is why they are excluded. Some of them may wear a burqa, that is hijab, have a long beard, wear a face, and this become ways to identify all Muslims. But is it necessary that all Muslims follow it? No. लेकिन इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ये हमसे अलग है, so that is why we exclude them, we marginalize them. Often this reasons become an excuse कि हम उनको unfairly treat कर सके और उनके against discriminate भी कर सके. And this is how you understand the concept of marginalization कि कैसे ये society में grow कर जाती है. Do you remember reading in your class 7 book about how the Ansaris were finding it difficult to rent a house? So I have already told you about it. एक और हमने एग्जाम्पल देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि. ही वॉज मूव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास. वो एक दलित बच्चा था जिसको प्लेग्राउंड साफ करवाया जाता था व्हेन द रेस्ट ऑफ द क्लासेस वर स्टडिंग, द चिल्ड्रन वर स्टडिंग. So that was also one form of marginalization because of his caste. There is another concept in your book that is ghettoization. What is ghettoization? It is basically जब हम लोग एक ग्रुपिज्म फॉर्म कर लेते हैं on account of similar practices. तो ये सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स कभी कभी क्या लीड कर देता है, ये किस चीज को, कि वो लोग एक जगह से माइग्रेट कर जाते हैं बिकॉज दे फील दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड इन एन अनफेयर मैनर, एंड दैट इज व्हाई ये घेटो हो जाते हैं. दे गो एंड दे सेटल इन सम अदर पार्ट. Discrimination on the labor force market, economic devaluation, discrimination on the real estate, discrimination regarding access to services, architectural space degradation, isolation, and self isolation. Okay, this all are a result of ghettoization. This prejudice also leads to hatred and violence. अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को exclude कर दोगे तो you will try to hurt their sentiments, and when this hurt of sentiments becomes very large, it gives rise to a lot of conflicts. और ये सारी चीज़ों को avoid करने के लिए, सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को इंटैक्ट रखने के लिए, द गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. एंड रिजल्ट्स ऑफ marginalization क्या होती है? सो यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इट. यू गाइज हैव अंडरस्टूड वेरियस कम्युनिटीज जो ये फेस कर रही हैं विद एग्जाम्पल्स. अब इनका एंड रिजल्ट्स क्या होता है? एक तो आपका सोशल स्टेटस लो हो जाता है, विच यू हैव सीन विद द केस ऑफ ट्राइब्स एज वेल एज मुस्लिम्स. आपको एक्सेस टू रिसोर्सेज इक्वली नहीं मिलते, एजुकेशन लिटरेसी रेट कम हो जाती है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है, इकोनॉमिकली मेंटली यू बिकम वीक, राइट? सो दिस आर सम ऑफ द एंड रिजल्ट्स. सो व्हाट कैन वी डू? अब इससे हमें पता चल गया कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो कि हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है. लेकिन सिंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेंस्ट दिस, वी मस्ट ऑल टेक स्टेप्स सो दैट वी कैन को एग्जिस्ट. इज इट नेसेसरी कि हम किसी को एक्सक्लूड करके ही ग्रो कर सकते हैं? नो. So if there is any such problem, we must always imagine and believe that humanity is primary. Keeping this in mind, we will be able to tackle the menace of marginalization. All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution, and that is why we must make an attempt to do so rather than breaking the Constitution and trying to do this kind of activities. अगर हम लोग ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटैक्ट हो जाएंगे अपने ही कल्चर में. वी विल नॉट बी एबल टू प्रिजर्व द कंट्रीज डाइवर्सिटी. इंडिया इज फेमस बिकॉज इंडिया इज डाइवर्स एंड इट इज ब्यूटिफुल, एंड डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस वी आर ऑल यूनाइटेड. ये यूनिकनेस को प्रिजर्व करने के लिए हमें मार्जिनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फेंकना पड़ेगा, राइट? सो एनी टाइम दैट यू सी अ पर्सन हु इज बीइंग मार्जिनलाइज्ड अगेंस्ट, please try and make them a part of your group so that this kind of activities do not happen. Conclusion: there are different reasons for each of these communities being marginalized. Marginalization is linked to having some kind of disadvantage, having a prejudice that you are facing. That means कोई आपके लिए कोई एक false opinion hold कर